solving problems in parallel, how we can solve a problem or any problem using parallel techniques, and how many parallel techniques are there that we are going to learn. Look, the techniques which we are going to discuss, that are just introductory techniques. There are lots of other techniques available for parallel processing. We are just going to get introduction about the parallel techniques. Okay, so let's start. But before that, is my screen is visible to you all and my voice is clear? Any problem? Any issue you are getting? Is my voice is clear to you all and screen is visible to you all? Okay. Okay, so let's start with this topic, solving problem in parallel. And yes, another important point is now we are having only 3 weeks teaching. So I will, it might be possible that I will go a little bit faster for this topic. If you will look at our syllabus, then this topic is under this head, that is the instruction level parallelism. So under this head, we are having this topic, that is an instruction level parallelism. So instruction level parallelism, processing. Under this head, we are going to learn this. There are 2 chapters, and which book we are going to follow. This is the book that we are going to follow for this 2 chapter, parallel computers, architecture, and programming. So this book we are going to follow. I am having the soft copy of this book, so I will share soft copy of this book with you all. So the book author is Raja Raman and Sivaram Murthy. So I will share this soft copy on our Google Classroom, as well as I will share my PPT also. Okay, so before we will start with the parallel processing, I hope all of you are already aware about this basic architecture of any processor, any computer system. So computer are generally broadly classified into these 2 kind of architecture, von Neumann architecture and Harvard architecture. So what is the difference between this von Neumann architecture and Harvard architecture? In von Neumann architecture, this is a left-hand side figure that indicates the von Neumann architecture. So in von Neumann architecture, we are generally using memory, single memory, to store our data as well as to store our instruction. So generally, instruction and data will be stored on a single memory. So combine, we can say that our RAM is there, and that will be only one RAM. That is a data RAM, or you can say that instruction RAM. So दोनों यहाँ पे हम यहाँ पे ही store करेंगे. And there will be the control unit, central processing unit. We are having ALU and control unit combinedly over here. So one by one instruction will be fetched. यहाँ से एक instruction fetch होगी. Then it will be decoded. Then whatever operand we require, that operand will be fetched. And if we require input, then input will be taken. ALU will perform some operation, and then you will get the output. That is a normal procedure for von Neumann architecture. What is the difference over here in Harvard architecture? Harvard architecture में क्या होगा? So यहाँ पे we will have separate memory. Look at it over here. We will have separate memory for instruction and separate memory for data. So it means that instruction and data both are in separate memory. So you can say that, so यहाँ पे आपकी instruction होगी वो हम one by one read करेंगे, but that is, let's say that this is, you can say that ROM का meaning ये predefined set of instruction होगी. अगर आप control के बारे में बात करोगे, so in our previous semester we have learned a controller. So controller में क्या होगा? So controller will have this kind of memory, instruction memory, in which we are just storing instructions, and it is having a separate memory that is for data. So we will read one by one instruction from here, and if require data, then data will be taken from data, or you can say that input output device, and then the control unit will perform some operation based on the data and instruction, and you will get some output. आपको output मिलेगा. So यहाँ पे ALU and control unit are separate as well as they are interconnected. So ये एक दूसरे के साथ connected होंगे. And another difference is यहाँ पे instruction memory and data memory, these both are different. So that is just basic thing about the von Neumann architecture and Harvard architecture. So now, till now, what we have learned, that is a sequential solving, a sequential method, sequential approach to solve any method.
So now importance, what is the importance in parallel processing? So importance of the parallelism is in preserving a parallelism and in allocating a task for getting maximum efficiency in solving a problem in parallel. So it means what? Why we are using this parallel processing? हम क्यों यूज करते हैं parallel? हमको ये parallel programming क्यों करना पड़ेगा? Why? First of all, what is the aim of this? So if you are doing a task sequentially, suppose आप कोई एक job sequentially perform करोगे, we will see with examples, lots of examples also. Suppose ये एक task है, आपने यहाँ से start किया है and यहाँ पे आप complete कर रहे हो. So if you will do task sequentially one by one, then it will take more time as compared to if you will divide it into multiple tasks. इसको आप multiple tasks में divide करोगे and you are having multiple processing elements also. So आपके पास multiple processing elements भी होने चाहिए so that you can perform a parallel processing faster. So we will see different methods, so you will get better idea about this parallel processing. So let's start with the first of all problem with example, so you will get better idea. So that let's consider that there are total 1,000 candidates appear in any one exam. कोई भी एक exam आप consider कर लो, आपकी seasonal exam या final exam, and there are 1,000 students who are appearing in this exam. So now assume that there are 4 questions in your question paper, and whenever you are writing, so we are assuming that most of the students has written all the 4 answers. So there are 4 questions and 4 answers. So 4 answers are there in each answer book. And each answer will take 5 minutes to be marked. So now if there are 4 answers that need to be evaluated, then how much time it will take to evaluate one answer book? If there are and one to evaluate one answer, if it takes 5 minutes, then to evaluate one answer book, how many time it will require? What is the time required to evaluate this one answer book? 20 minutes, yes. So one answer book evaluate करने के लिए 20 minutes लगेंगे. Because why? Because एक आंसर को इवेल्युएट करने के लिए 4 मिनट, सो सेकंड एक आंसर को इवेल्युएट करने के लिए 5 मिनट, सेकंड आंसर को इवेल्युएट करने के लिए सो 5 plus 5 plus 5. So how many such questions are there? How many such answers that need to be evaluated? So that is a total 20 for one paper, or you can say that for one answer book. And how many such answer books are there? How many such answer books are there? 1,000 in our example. So total time required in this case, so that is a 1,000 into 20. So what is the total time required over here? That many number of minutes it will take if only one teacher will do this task. अगर एक ही टीचर है आपके पास and that particular teacher is performing this task, then how much time it will require? So that is, and this is a procedure. So this is the steps that teacher has to follow. So teacher क्या करेगा? So take an answer book from the pile of the scripts. That means there are 1,000 answer books are there. Teacher will take first answer book. So पहले ही answer book को उठाएगा. So in first answer book there are 4 questions. So we are initializing I equal to 1 to 4 answers that needs to be evaluated. So I equal to 1 to 4. Now grade answer to the question number 1, then add marks given for each question. So पहले question का answer check करने के बाद उसको उसको कितना marks मिले, then need to be evaluated question number 2, then put the script. So ये task हम repeat करेंगे. I equal to 1 to 4. Do the step number 3. Step number 3 हम repeat करेंगे. So step number 3 कितनी बार repeat होगा? So step number 3 will be repeated 4 times. So question number 1 का marks हम लिखेंगे, suppose let's say that 2. Question number 3, 2 का marks लिखेंगे, let's say that 5. Then 4. And then let's say that 3. Now what is the step number 4? So step number 3 is grade answer to each and every question. So question number 1, question number 2, question number 3, and question number 4. That teacher has evaluated like this. Okay, now add marks given for each question. So now what we need to do? We need to perform addition. So 2 plus 5 plus 4 plus 3. So that is the total marks. So that means make a total of marks and then
write a total and put the script into the pile of marked answer book. So it means that now this answer book has been evaluated. So ये answer book आपकी evaluate हो गई. So how many times we have to repeat this step? So repeat step number 1 to 5. ये जो step number है 1 to 5. Step number 1 to 5. This is for one answer book. So now second answer book. So repeat the step number 1 to 5 until no more scripts are left in the input. So जब तक आपकी input में जब तक कोई answer book बाकी नहीं रहती, it means that suppose let's consider this is a pile of your answer book. ऐसे यहाँ पे आपकी 1000 answer books यहाँ पे पड़ी हुई है. So stack आप इसको consider कर सकते हो. So that is a stack is over here. So इसमें से हम क्या करेंगे? पहली answer book यहाँ से कोई टीचर है वो उठाएगा, then it will be evaluated and then it will put it into output pile. So यहाँ पे वो answer book आएगी. So like that. So that is a sequential procedure, sequential solution. You are having only one teacher. So this teacher has to follow this 6 steps. ये 6 steps वो one by one follow करता जाएगा and it will evaluate like this. So if only one teacher is evaluating this 1000 answer scripts, then he or she takes 20 minutes for each answer script. So the total time taken is 20,000 minutes. So this is a sequential solution for this problem. Problem कौन सा problem है? Evaluating your answer book. Answer book को evaluate करने का जो problem है, उसमें कितना time लगेगा? If there is only one teacher, and if we are approaching a sequential solution, then it takes 20,000 minutes. So that is sequential solution. So what is the disadvantage of this? It takes lot of time. So to reduce the time, what we will introduce parallelism. So now we will learn 8 methods of parallel processing. This, look, I am again saying this are not the exclusive list. These are just introductory methods. There are lots of other advanced methods of parallel processing also, but for better starting, we are learning this basic parallel processing technique. Okay, so what we have learned only sequential technique. Sequential, अगर आप एक ही teacher है आपके पास, so one by one, how he will or she will evaluate your answer book. So now method number 1. This is the first method for parallel processing, that is a temporal parallelism. So in temporal parallelism, what will happen? So temporal parallelism में हम क्या करेंगे? So observe it very carefully. Now what we are doing, previously in sequential method, we have considered that we are having only one faculty. Now we will consider that we are having 1, 2, 3 and 4 faculty. This is just an example. It means that we are having 4 faculties. Why I have taken 4 faculties? Because in my answer book, I am having 4 questions need to be evaluated. So I have considered right now 4 faculties. So that will be given to you, that how many faculties you have to consider. But right now I have considered 4 faculty. So now what will happen? So अब क्या होगा? So now what will happen? Your first paper, यहाँ से जो आपका पहला पेपर है वो सिलेक्ट होगा. So this is an input pile. यहाँ पे आपके पेपर्स रखे हुए हैं. Your answer books are over here. 1 to 1000 answer books are over here. So now first paper will be taken by first faculty, and first faculty will evaluate only question number 1. Then this paper will be passed to the next faculty. Next faculty will evaluate only question number 2. Then same thing. This paper will pass to the next faculty. This faculty will evaluate only question number 3. And then same way, next, this paper will be passed to the 4th faculty. And now 4th faculty will be evaluate only question number 4. And at the end, it will submit it. यहाँ पे आपकी जो output file होगी वहाँ पे वो रख देंगे. So at the end of 20 minutes, your first paper will be evaluated. 20 मिनट जब खत्म हो जाएगी तब आपका पहला पेपर इवेल्युएट हो जाएगा. बट यहाँ पे एडवांटेज क्या होगा? नाउ लुक एट दिस पॉइंट. यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करो. नाउ व्हेनेवर दिस P1, यहाँ से जब आपका पेपर P1 has been handed over to the second faculty P2, so now this first faculty is free. So first faculty can take second paper and start evaluating over here. So if you will observe, then at this moment,
P1 and P2 both are in process. It means that your first paper of your student number 1 and paper of student number 2 both are in process. Same way, आप यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3 तीनों का पेपर अभी प्रोसेस में है. अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो और 4 students are papers are in process. So like that. So यहाँ पे advantage क्या मिलेगा? What is the advantage over here? Like advantage will be जब भी आपका faculty suppose यहाँ पे P1 आपका पहला फैकल्टी है वो P1 को इवेल्युएट करेगा, फर्स्ट स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्युएट करके सेकंड फैकल्टी को पास कर देगा. Now that particular faculty is free, so it can take next paper. So यहाँ से second paper वो लेगा and then evaluate it and then hand it over to the P2. So उसके बाद वो next P2 को hand over कर देगा. So like that. So parallelly ये सभी operate कर रहे होंगे. So initially ये तीनों ideal होंगे, Q2, Q3 and Q4. You can say that teacher 2, teacher 3 and teacher 4. For 20 minutes आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा. क्यों? क्योंकि 20 मिनट तक यहाँ पे क्या होगा, पहला पेपर यहाँ पे आएगा, then it will go to the next. So यहाँ पे 5 मिनट तक ये टीचर आइडियल रहेगा. सेम वे ये टीचर है T3, that will remain ideal for 10 minutes. सेम वे this will remain ideal for 15 minutes. ये 15 मिनट्स तक आइडियल रहेगा, बाद में उसको पेपर मिलेगा. Then onwards after each and every 5 minutes your answer book will be evaluated. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, this is the important point, this you need to understand it, that first paper P1 P2 यहाँ से आपका जो पहला पेपर है उसको इवेल्युएट होने में कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट. बट आफ्टर दैट at each and every 5 minutes your next paper will be evaluated. आपका इसके बाद जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, सिर्फ पहले पेपर के लिए आपको 20 मिनट लगेंगे. नेक्स्ट आफ्टर 5 मिनट्स योर each and every paper will be evaluated. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो गया होगा. So that is an important point that you need to understand it over here. That is a temporal parallelism और इसको हम बोलते हैं पाइपलाइनिंग. इसको आप क्या बोलते हो, पाइपलाइनिंग. दिस इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग. यहाँ पे आप इसको बोलते हो पाइपलाइनिंग. सो यहाँ पे क्या होगा, कैसे, आई थिंक यू ऑलरेडी लर्न इन सीओ ऑल्सो. सीओ में आपने ये टॉपिक ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है. ये सेम थिंग वी आर डूइंग ओवर हियर. यहाँ से आप P1, यहाँ से आपका P1 आएगा, फिर P1 आगे पास होगा, then so like that. So that is you already learned pipelining. Pipelining आपने already study किया हुआ है ये. So nothing new is there. We are just revising it. Okay. So this particular method is known as pipelining, or it is also known as temporal parallelism. And this method, what we are doing in this method, our job. What is a job? Job is to evaluate your answer book. How we are dividing it to evaluate answer book? That is our job. We are dividing it into set of task. So उसको हम टास्क में डिवाइड करेंगे. So पूरा एक पेपर है, उसको हमने डिवाइड कर दिया. We have divided it into 4 tasks. That is answer number 1 need to be evaluated by faculty number 1, answer number 2, answer number 3, and answer number 4. So now in one paper, these are the 4 tasks, or you can say that in one job, these are your tasks, A1, A2, A3, A4. So A1 should be performed by faculty number 1, A2 should be performed by faculty number 2, A3 should be performed by faculty number 3, and A4 should be performed by faculty number 4. And how they will perform, पहले first faculty यहाँ से input file का access किसके पास होगा, पहली faculty के पास ही. So first question access होगा, फिर second question access होगा, फिर third question access होगा, फिर आपका fourth same way. P2 paper में पहला question, second question, third question, fourth question, like that. So that is how pipelining will work. So यहाँ पे आपका time क्या लगेगा? So what is the time over here? So if a time taken to correct all answers, answer number 1, answer number 2, answer number 3, answer number 4 equal to 5 minutes. This is the most important point about this technique. यहाँ पे assumption क्या है हमारा? This is our assumption that each answer, to evaluate each answer, we require same amount of time. Suppose आपका पहला question है वो MCQ का question है. Suppose your first question is MCQ question. Your second question is descriptive question. Your third question is programming. And your fourth question is draw some diagram.
सो हम यहाँ पे अभी क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, टू इवेल्युएट दिस questions we are require same amount of time, which is not ideal, which is not there in real, but just for this technique we are assuming it right now. So यहाँ पे इसको evaluate करने के लिए भी आपको 5 minutes लगेंगे, इसको भी evaluate करने के लिए आपको 5 minutes लगेंगे, इसको भी evaluate करने के लिए आपको 5 minutes लगेंगे. So that is, it is our assumption. So now based on this assumption, based on it is our technique, the first answer book will take 20 minutes to correct, and then all rest are corrected in every 5 minutes. Corrected means यहाँ पे check. Correct का meaning यहाँ पे आप क्या consider करोगे? Evaluated, checked. So evaluated in after every 5 minutes. So what is the total time required over here? यहाँ पे total time कितना लगेगा? So the total time to require to evaluate 1000 answer books, that is पहली answer book के लिए 20 minutes. So how many remaining are there? 999, and it will be evaluated in 5 minutes after 20 each and every 5 minutes. So total time will be 5015. So if you will compare it with our sequential time, so it is, if our sequential time was 20,000, sequential time क्या था? 20,000, and ये time है वो क्या है? 5,000 approximately. आप इसको consider करो 5,000. So you can say that it is 1/4 of your sequential task. So this method is parallel processing method, as 4 teachers work in simultaneously. So ये method है, किसकी method है? Parallel processing. So that is that is a mechanism, or that is our topic, that is a parallel processing. It means that we are having 4 teachers. So computer के terminology में हम किसको क्या बोलेंगे? We are having 4 processing elements, 4 CPU. So how this 4 CPU will work? So 4 CPU अगर आपके पास है, if you are having 4 processing element, 4 arithmetical logical unit, then definitely your task will be faster. But that will be not the case in each and every example. हर एक केस में वो faster ही result करेगा ऐसा जरूरी नहीं है. Why? Because we will see disadvantages भी इसके हम देखेंगे. So first of all, यहाँ पे ये technique आपको समझ में आ गई. So 4 teachers work in simultaneously to do the job, and the type of parallel processing, this is known as temporal parallelism, assembly line processing, or pipeline processing. इसको हम क्या बोलते हैं? What are the other names? What are the alternate names of this technique? Parallel processing, pipelining, or you can say that temporal parallel processing. It is also known as like that. Is it clear? Any doubt in this technique? First of all, understand it. If you will understand the theory, then you are able to understand the examples. We will see examples based on this. इसके base पे हमको examples भी करने हैं. So if you will understand the theory clearly, then and then only you are able to understand, you are able to do examples. Only one student is attending the lecture. What about other students? Okay. So let's see. This is, we have seen theoretically. ये हमने theoretically ये हमने consider किया था कि इसमें time कितना लगेगा. Now let's do it mathematically. So first of all, what are the advantages and disadvantages, and what is this technique about? So this is the technique. Just a minute. Okay. So this technique is most appropriate for which kind of job? This technique is most appropriate for which kind of jobs? The jobs to be carried out are identical. It means that आपका जो answer 1 है, answer 2 है, answer 3 है, answer 4 है. These are the sub task. These are the task. And ये जो task मिला कि आपका जो एक पूरा बनता है, that is your paper. That is, you can say that one job. So
if you are going to perform a job repetitively, इसका मीनिंग आप ये repetitive perform करोगे, आपके पास 1000 आंसर बुक्स है evaluate करने के लिए. So if you are performing repetitive job, then that is this particular technique is identical for you. A job can be divided into many independent tasks. आप अगर ये job को ये इंडिपेंडेंट टास्क में डिवाइड कर सकते हो तो ये मेथड आपके लिए suitable है. अगर आप इसको इंडिपेंडेंट टास्क में डिवाइड नहीं कर सकते हो then this method is not suitable for you. Just for example, consider मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सपोज क्वेश्चन नंबर 2 इज लिंक्ड विथ क्वेश्चन नंबर 1. इसका मीनिंग अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 सपोज मैं यहाँ पे ऐसा दूंगा कि लुक एट द डेटा और बेस्ड ऑन आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1 डू द फॉलोइंग थिंग्स. सो अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू है तो ही हम आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को इवैल्यूएट करेंगे. सो इन दैट केस दिस मेथड इज नॉट सुटेबल बिकॉज क्वेश्चन 2 or you can say the answer 2 is not independent of answer 1. So if jobs are divided into such way that they are independent, then and then only this technique is feasible. And another important point is the time taken for each task is the same. अगर आंसर 1 को इवैल्यूएट करने के लिए, आंसर 2 को इवैल्यूएट करने के लिए, आंसर 3 को इवैल्यूएट करने के लिए एंड आंसर 4 को इवैल्यूएट करने के लिए, अगर ये आपके फोर्थ आंसर है उसको इवैल्यूएट करने के लिए सेम टाइम लगता है तो ही ये टेक्निक आपके लिए बेटर है. सपोज इसके लिए सिर्फ 1 मिनट लगता है, इसके लिए सपोज 7 मिनट्स लगता है, it will take suppose answer number 3 will take 2 minutes and this will take 5 minutes, then this method will be not suitable for you. Why? We will see with example. ये हम एग्जांपल के साथ देखेंगे. सो अगर यहाँ पे इसमें क्या करना होगा, अगर तो इसमें प्रॉब्लम क्या होएगा, सो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, सो प्रॉब्लम विल बी, सो यहाँ पे सपोज आप टाइम कंसीडर करो, कंसीडर दिस इज द टाइम. सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट मिनट योर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी इवैल्यूएटेड, देन एट द एंड ऑफ 8 मिनट योर सेकंड क्वेश्चन विल बी इवैल्यूएटेड. बट व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 इवैल्यूएट करने के लिए आपको यहाँ पे टाइम लगेगा. सो मीनवाइल ये A1 है वो सिर्फ एक ही आंसर बुक इवैल्यूएट कर सकता है, इवन दो इट इज टेकिंग 1 मिनट टू इवैल्यूएट आंसर, देन इट हैज टू वेट क्योंकि यहाँ पे ये फ्री नहीं है. योर सेकंड टीचर इज नॉट फ्री. जब तक आपका सेकंड टीचर फ्री नहीं होता वो उसको पेपर पास नहीं कर सकता है. सो फर्स्ट टीचर ने 1 मिनट में आपका पहला क्वेश्चन इवैल्यूएट कर दिया और वो सेकंड टीचर को पास कर दिया. अब सेकंड टीचर क्या कर रहा है, अभी पहले पेपर को ही इवैल्यूएट कर रहा है, स्टूडेंट नंबर 1 का पेपर इवैल्यूएट कर रहा है, उसको 7 मिनट लगेंगे. तो 7 मिनट तक आपका पहला टीचर है अब क्या करेगा, बैठा रहेगा. क्यों? क्योंकि वो उसको आगे पेपर पास नहीं कर सकता है क्योंकि टीचर नंबर 2 बिजी है. जब तक टीचर नंबर 2 फ्री नहीं होता है तब तक वो उसको पेपर पास नहीं कर सकता, नया पेपर पास नहीं कर सकता, स्टूडेंट 2 का पेपर पास नहीं कर सकता है. सो स्टूडेंट 2 का पेपर तो वो 1 मिनट में इवैल्यूएट कर देगा बट उसको वेट करना होगा. सो दैट इज अ डिसएडवांटेज. सो दैट्स व्हाई इफ टाइम टेकन फॉर ईच टास्क इज नॉट सेम देन दिस मेथड इज नॉट सुटेबल. बट अगर वो सेम होगा तो ये मेथड आपकी सुटेबल है. सो दैट इज अ टाइम टेकन टू सेंड द टास्क. अनदर थिंग, ये जो 2 टीचर है यहाँ पे आपका टीचर नंबर 1 है एंड दिस इज अ टीचर नंबर 2, वो टीचर आर ओवर हियर. सो एक टीचर को दूसरे टीचर को ये आंसर बुक जो सेंड करना है, पेपर क्वेश्चन नंबर 1 इवैल्यूएट करने के बाद आपका जो पेपर है उसको सेंड करना है. सो इफ टाइम टेकन टू सेंड द टास्क टू वन टीचर टू अनदर टीचर इज नेग्लिजिबल. इसका मीनिंग सपोज आप ऐसा एज्यूम कर लो कि ये जो टीचर नंबर 1 है वो भी बैठा है हमारी लैब नंबर, आप कंसीडर करो कि हमारा कैंपस है उसमें ये लैब 2 में बैठा है, टीचर नंबर 1 है वो लैब 2 में अभी है और वहां पे बैठ के आपका पेपर इवैल्यूएट कर रहा है. एंड देन ये जो आपका टीचर 2 है वो कहीं हमारी लाइब्रेरी में बैठा है. सो ये बीच का टाइम, यहाँ पे लैब 2 से लाइब्रेरी तक जाने का टाइम आपको एक प्यून रखना होगा और वो प्यून यहाँ से आपका पेपर लेके लाइब्रेरी में टीचर 2 को सबमिट करेगा. सो इट विल टेक मोर टाइम. सो इफ in that case also this method is not suitable.
So this method is suitable only that time taken to send the task to one teacher to another teacher is negligible as compared to the time taken to evaluate. इसको evaluate करने के लिए आपको 5 मिनट लगेंगे, तो 5 मिनट के कंसिडरेशन में ये टास्क जो आप यहाँ पे टीचर नंबर 1 से टीचर नंबर 2 सेंड कर रहे हो, वो 5 मिनट से बहुत कम होना चाहिए. बहुत कम का मीनिंग वो मिली सेकेंड्स में होना चाहिए. Then only this method is suitable. And the number of tasks is much smaller as compared to the number of jobs. इसका मीनिंग हमारे पास यहाँ पे जो टास्क है वो कितने हैं? आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3 एंड आंसर नंबर 4. So that is a task. And job means your number of answer sheets. So how many number of answer sheets are there? So 1,000 answer sheets are there, and we are having 4 answers. So that is very small as compared to 1,000. 4 is very small as compared to 1,000. So in this case, this method is suitable. अगर suppose यहाँ पे consider करो कि आपके पास सिर्फ 5 papers ही है. If you need to evaluate only 5 answer books, then this method will take more time, or that is it is not suitable method. अगर आपके पास सिर्फ 5 आंसर्स के इवेल्युएट करने के लिए है, then you are wasting 4 faculty. It means that you are having 4 resources, so you are wasting your 4 resources. If you are having just 5 answer books to need to be evaluated, then why need to pay for 4 faculties? आप एक ही फैकल्टी को दे दो. पर अगर आपके पास ज्यादा आंसर बुक्स है और उसको बहुत जल्दी आपको इवेल्युएट करने हैं, then you need to pay to the 4 faculties. So that is this technique. And now speed up and efficiency of this method. So what is the speed up and what is the efficiency that we are going to learn, that we are going to discuss? So before we are going to discuss, let's identify some basic terminology. So यहाँ पे जो number of jobs है उसको हम बोलते हैं n. We will call for method number 1, or for all the methods, most of the methods that we are going to learn and sequential method that we have learned, n means total number of jobs. So in our example, it is 1,000. Now k will be different for different methods. So यहाँ पे ये method number 1 में k क्या represent करेगा? So it is the number of task. इसका मीनिंग एक आंसर बुक में आपके पास कितने टास्क है, एक जॉब में आपके पास कितने टास्क है. So we are having 4 tasks. So that's why we have divided into 4. And ideally in method number 1, we will consider that we will have as many number of tasks, that many number of resources we will have. For method number 1, what is the assumption? Even if it is not given, we will consider that in how many tasks we are dividing our job? 4 tasks. So we will assume that we are having 4 teachers, or you can say that 4 resources. So let the time taken to do the job, that is एक job को करने के लिए आपको कितना time लगेगा? So it is a 20 minute, because that is a 5 minute for one answer. There are 4 answers, so 5 into 4, so that is a 20 minute for one job. Now let each job be divided into k task. So that is as I have told you, एक job को हम 4 task में divide करेंगे, and each task take equal time to execute. This is the most important assumption, that each task need to be evaluated in the same amount of time. So उसको हर एक को same time लगेगा. आंसर 1 को चेक करने के लिए भी हमको 5 मिनट लगेंगे, 2 को चेक करने के लिए भी 5 मिनट लगेंगे, 3 को चेक करने के लिए भी 5 मिनट लगेंगे, and answer number 4 will be also evaluated into 5 minutes. So that is the assumption that we have considered over here. And let each task be executed by different teachers. So इसका meaning answer number 1 टीचर नंबर 1 इवेल्युएट कर रहा है, आंसर नंबर 2 टीचर नंबर 2 इवेल्युएट कर रहा है, आंसर नंबर 3 टीचर नंबर 3 इवेल्युएट कर रहा है, and answer number 4 is evaluated by teacher number 4. So that is our first method. So now, so that is time taken to do one task is p by k. So इसका मीनिंग एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा by one teacher. So that is a p by k. So that is obviously, so p by k means total टाइम आपको लगता है एक आंसर बुक इवेल्युएट करने के लिए 20 मिनट. सो 20 डिवाइडेड बाय 4, इसका मीनिंग हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? 5 मिनट. सो टू डू वन टास्क, so that is also given to you
to do perform one task, we require 5 minutes. Okay. So now time taken to complete n jobs with no pipelining. Now consider this. No pipelining means that is a sequential. So sequential में आपको कितना time लगेगा? That we already seen. ये example हमने already study किया था. क्या किया था? 20 into 1000. So it means that P into N. So that is a P into N. So that is a sequential time. Sequential time will be 20,000. So that is sequential time. Mathematically इसको हम कैसे calculate करेंगे? How we will do it mathematically? So that we are going to learn. So that is N into P. That will give you the sequential time without pipelining. Pipelining अगर आप implement नहीं करते हो, sequentially ये task perform करते हो, तो आपको कितना time लगेगा? Then pipelining में आपको कितना time लगेगा? So time to take a pipelining. So that is that we have seen. पहला task है वो आपको कितना time में complete हो जाएगा? So first task will be completed into. So your task number 1 will be completed into P minute, or you can say 20 minute. So that is a P plus. So now आपके जो total tasks थे, total jobs है N, उसमें से एक job complete हो गया. अब रिमेनिंग क्या है आपके पास? सो n-1. सो n-1 कितने टाइम में कंप्लीट होंगे? सो n-1 विल बी कंप्लीटेड इनटू p by k. So that is a p by k. So if you will simplify this, so what is the equation you will get? So you will get it like this: k plus n-1 p upon k. So what is a speed up? So speed up is nothing. The speed up is non-pipelining time upon pipelining time. So non-pipelining time का equation क्या है? np. Pipelining time का equation क्या है? This. So that is a k plus n-1 p upon k. So if you will simplify this, so you will get this. So that is a k. So this you will get k upon 1 plus k minus 1 upon n. So I hope all of you are able to get it. यहाँ से आप p cancel करोगे, फिर आपको k यहाँ पे इसको n से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा k by n. यहाँ पे आप इसको k n से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा n by n. यहाँ पे आएगा 1 by n. इसमें से आप ये सब कुछ कॉमन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 plus k minus 1 by n. and k ऊपर चला जाएगा. So that is a total. So this is the equation. This is our equation for speed up. You can remember this, or you have to remember this, or you can remember this also. आप ये दो में से कोई भी याद रखोगे तो चलेगा. So this is the equation for speed up for method number 1, or you can say that pipelining. Now, if we will consider that n is very large as compared to k, n means our number of jobs. So that is n means number of jobs is very large as compared to k. So यहाँ पे ये terminology क्या हो जाएगी? So this will be 0. So that means k upon 1. So it means that if your k n is very large than k, then your speed up is equal to k. It means that your speed up is equal to ideal. This is called ideal speed up. ये क्या होगा? Ideal speed up होगा. Ideally आपको क्या मिलना चाहिए? So that is a k. And what is the efficiency? Efficiency will be speed up upon k. So speed up upon k, that is your efficiency. So thus speed up is directly proportional to the number of teachers working in pipelining. So इसका meaning, अगर आप यहाँ पे आपने कितने टीचर्स रखे थे? हमने 4 टीचर्स रखे थे. So, और 4 टास्क में डिवाइड किया था. So इसका मीनिंग यहाँ पे आपको स्पीड अप कितना मिलेगा? 4. इसका मीनिंग योर टास्क विल बी परफॉर्म 4 टाइम फास्टर. So thus the speed up is directly proportional to the number of teachers. So अगर आप ये task आपके पास suppose आपके पास ये जो आंसर बुक है उसको आप suppose आप उसमें उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दोगे. A1, A2, A3, A4. suppose आपके पास 5 टास्क है, आपके 5 क्वेश्चंस है और आप 5 टीचर रखोगे तो आपका टास्क है वो 5 टाइम फास्टर होगा एज कंपेयर टू योर सीक्वेंशियल टास्क की कंपैरिजन में. बट दिस विल बी नॉट ऑलवेज केस. क्यों? क्योंकि उसके लिए कंडीशंस जो हमने प्रीवियसली मैंने आपको बताई, ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. आपके पास ये सब कुछ होना चाहिए. आपके टास्क इंडिपेंडेंट होने चाहिए. हर एक टास्क को सेम टाइम लगना चाहिए. देन एंड देन ओनली इट विल गिव यू दिस स्पीड अप. सो दिस इज आइडियल स्पीड अप.
बट रियल लाइफ में ऐसा आइडियल स्पीडअप कभी नहीं होता. आइडियली सपोज आप 4 फैकल्टी को बैठा दोगे तो 4 टाइम फास्टर आपका, सपोज उसके लिए आप सपोज 1000 आंसर बुक इवैल्यूएट करने के लिए एक टीचर रखते हो और सपोज इट विल टेक 10 आवर्स. तो ऐसा नहीं होगा कि आप 4 टीचर्स को बिठा दोगे तो वो 10 डिवाइडेड बाय 4 डायरेक्टली आपका 2.5 आवर्स में टास्क कंप्लीट हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा. इट विल टेक मोर टाइम. व्हाई इट विल टेक मोर टाइम? सो बिकॉज दैट इज द आइडियल सिनेरियो. बट रियल में क्या होता है? रियल में both tasks, so that are the problems. What are the problems in this processing में problems क्या होता है? So first problem is synchronization problem. So synchronization का problem क्या होगा? So what is the meaning of this? So equal time should be taken in performing each task. So that is, ये हर एक टास्क के लिए, हर एक जॉब के लिए ये पॉसिबल नहीं है. So that is synchronization problem will be there. Teacher number 1 and teacher number 2 as well as teacher number 3 as well as teacher number 4, ये एक साथ आपके ये सिंक्रोनाइजेशन में होने चाहिए. If they are not in synchronization, then your task will be not completed. It means that that will be not possible. Same way, second one, bubble in the pipelining. There will be the possibility of bubble in the pipelining. What is the meaning of this? What is the disadvantage of this? What is the meaning of this bubble? So if some tasks are absent in the pipelining, इसका meaning, suppose roll number 1 है, उसने answer number 1 लिखा ही नहीं है. If that answer is not written by a particular student, then that particular teacher has not to do anything. वो क्या करेगा? सिर्फ उसको वो आंसर बुक आगे पास कर देना होगा. So वहां पे bubble, it means that particular teacher has to wait. So that is, ऐसा तो बहुत सारे जगह पे हो सकता है. So that is, if some questions are unanswered, then bubble is formed. Bubble is formed means, suppose आप अभी हम पेपर नंबर 15 के बारे में बात करते हैं. Let's say that स्टूडेंट नंबर 15 का पेपर पिकअप किया, तो स्टूडेंट नंबर 15 ने आंसर नंबर 3 है वो नहीं लिखा है, तो टीचर 1 के पास जाएगा, टीचर 2 के पास जाएगा, फिर टीचर 3 के पास जाएगा. तो टीचर 3 यहाँ पे क्या करेगा? आइडियल, उसको कुछ करना नहीं है. So that is a bubble in your pipelining. So this kind of bubble will be there in your pipelining if particular answers is not written. Same way, next disadvantage is fault tolerance. The system does not tolerate a false. It means what? If your one teacher gets up and go for the coffee, अभी ये 4 टीचर आपने रखे हैं, टीचर नंबर 1, टीचर नंबर 2, टीचर नंबर 3 and teacher number 4. If these 4 teachers are there, they are evaluating your answer one by one. पहला answer, दूसरा answer, तीसरा answer. Now suddenly after a few minutes, suppose teacher number 3 gets up and go for coffee. So अब यहाँ पे क्या होगा? पूरी आपकी सिस्टम स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि जब तक टीचर नंबर 3 वापस नहीं आता आपकी पाइपलाइन आगे नहीं बढ़ पाएगी. That is a disadvantage. टीचर नंबर 1, टीचर नंबर 2, टीचर नंबर 4 आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, बट टीचर नंबर 3 अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे सभी को वेट करना होगा, बिकॉज दे कैन नॉट पास डायरेक्टली. वो यहाँ से T2 डायरेक्ट T4 को पास नहीं कर सकता है. T2 हैज टू वेट फॉर T3. सो जब तक T2 वेट कर रहा होगा तो T2 वेट करेगा, उसके वजह से T1 को भी वेट करना होगा, एंड T3 है नहीं तो T4 भी वेटिंग में होगा. सो लाइक दैट ईच एंड एवरी टीचर विल बी देयर. यहाँ पे हर एक टीचर है वो. सो दैट मीन्स if this will happen, if any particular teacher, any particular processing element will fail, or if it goes for coffee, teacher will goes for coffee, then your whole pipeline will be affected. And inter-task communication, ये teachers है उसको जो communication करना है, teacher number 1, as I have told you, teacher number 1 and teacher number 2. So teacher number 1 से teacher number 2 आपको answer book pass करनी है, तो ये time बहुत कम होना चाहिए. So that is known as inter-task communication time. The time taken to pass the answer book between teachers should be negligible as compared to time to evaluate the answers. So अगर ये time ज़्यादा होगा, then also this method is not suitable because it will take more time. आपका जो speed up होगा वो achieve नहीं होगा. हमारा main aim क्या है? What is the main aim of this method? We want to complete our task faster.
We want to complete our job faster. What is a job? यहाँ पे job क्या है हमारा? To evaluate answer books. Results हमको देना है. Second sessional का रिजल्ट देना है और सेकंड सेशनल एग्जाम का रिजल्ट देने के लिए as soon as possible we want to give it. But what is the problem? That is only one teacher is there, so it will, that is a sequential method. But अगर मैं अकेला ही नहीं होऊंगा, if that particular answer books are evaluated by 4 teachers, then it will be, you will get your result faster. So that is this particular method number 1. यहाँ पे scalability, the number of teachers working in a pipeline cannot be increased beyond a certain limit. इसका meaning क्या होगा? आप up to some limit, if you will provide, if you will increase number of teachers, it's okay. But beyond that, suppose आपके पास 1000 आंसर बुक्स है और आप वहां पे 100 टीचर्स को लगा देते हो, but if you are keeping 100 teachers to evaluate your 1000 answer book, then it will waste of time, क्योंकि हर एक टीचर है वो fully यूटिलाइज नहीं होगा. That is, और 1000 टीचर्स को आपको पे करना होगा. That is a teachers means consider, यहाँ पे आप अगर आप कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में हम इसको बोलते हैं, then consider teachers as your resources. So we are wasting of your resources. Each and every resources are very costly. So that is, your scalability issue is also there. Beyond some limit, you cannot increase that teachers, number of teachers, you cannot increase number of resources. So, but यहाँ पे advantage क्या होगा? So what, very effective technique for parallelism, in which condition if the all assumptions will be satisfied. So very efficient, as each stage in pipeline can be optimized to do a specific task. So यहाँ पे इसका एडवांटेज दूसरा क्या है? अगर वो सभी एजम्पशंस आपके, अब हमने जो एजम्पशंस किए हैं वो सेटिस्फाई होंगे, तो ये मेथड आपको एडवांटेज क्या क्या प्रोवाइड करेगी? दैट इट इज इफेक्टिव मेथड, एज वेल एज यहाँ पे जो आपका टास्क है वो पर्टिकुलर स्पेशलाइज होगा. वो सपोज आपका आंसर नंबर 1 है, नाउ कंसीडर दैट आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3 एंड आंसर नंबर 4. नाउ कंसीडर दैट दिस इज द पेपर ऑफ योर कंपनी का एक पेपर है. ये आपका कंपनी की आंसर बुक, आपका जो एक क्वेश्चन पेपर है, और वो क्वेश्चन पेपर कोई कंपनी सिलेक्शन के लिए है, आपकी जॉब के लिए है. तो जॉब के लिए आप क्वेश्चन पेपर में उसने 4 क्वेश्चंस पूछे थे आपको. सो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सपोज कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 है सपोज वो कोई डीबीएमएस का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 है सपोज वो कोई आपके एल्गोरिथम का क्वेश्चन है. एंड क्वेश्चन नंबर 4 है सपोज वो कोई आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है. सो आपके पास ऐसा कोई एक्सपर्टीज होना चाहिए. अगर आप सीक्वेंशियल टास्क करते हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा? अगर आप सीक्वेंशियल टास्क करते हो मींस एक ही टीचर ये सब कुछ इवेल्युएट करेगा, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज भी होना चाहिए, डीबीएमएस का नॉलेज भी होना चाहिए, एल्गोरिथम का नॉलेज भी होना चाहिए, एंड आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोज जावा या पाइथन उसका भी नॉलेज होना चाहिए. बट अगर आप ये मेथड नंबर 1 इंप्लीमेंट करते हो तो क्या कर सकते हो आप? टीचर नंबर 1 विच इज एक्सपर्टाइज इन ओएस, यू कैन hire that particular teacher. So it will only evaluate your operating system answer. Then same way ये आपका सिर्फ DBMS का आंसर evaluate करेगा. Same way ये आपका सिर्फ algorithm का आंसर evaluate करेगा. So you can hire specialize. So that is very efficient, as each stage in pipeline can be optimized to be do the specific task. So each teacher in the pipeline can be fine tuned to do the one kind of job. और वो पहला आपका टास्क है वो फास्टर होता जाएगा, बिकॉज फाइन ट्यून जैसे जैसे आप वो इवेल्युएट करते जाओगे, देन इट विल टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम एज कंपेयर. सो ऑल द टीचर्स नीड नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द जॉब्स. आपके टीचर्स है वो हर एक जॉब में एक्सपर्ट्स नहीं होने चाहिए. हर एक जॉब में एक्सपर्ट है ऐसा जरूरी नहीं है. वो पर्टिकुलर टास्क के लिए एक्सपर्ट होने चाहिए, स्पेशलाइज होने चाहिए. सो ऑल द टीचर्स नीड नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द जॉब्स. So इसका मीनिंग आपके टीचर्स डीबीएमएस, जावा, उसका सभी का नॉलेज है ऐसा जरूरी नहीं है. सिर्फ एक पर्टिकुलर डोमेन का नॉलेज है तो उसको वो क्वेश्चन असाइन कर दो. So that is the advantage of this method. So that is method number 1, that is a temporal parallelism. Is it clear?
temporal parallelism. Any doubt in this technique? Pipelining. This is the pipelining which you learn in CO. CO में भी आपने ये study किया हुआ है. So I hope it will be easy. It will be easy to understand it. Any doubt in this first technique, pipelining? Nothing new is there. You already learned. आपने instruction pipelining वो सब कुछ CO में study किया हुआ है ये. And same thing we are going to discuss over here in our second chapter also. वो instruction pipelining, उसके advantage, disadvantage सभी वापस next chapter में भी आएंगे. But यहाँ पे, so my advice is before for this particular session, ये जो sessional 3 का जो topics, जो भी topics हैं, उसके लिए आप एक बार वो revise कर लो, pipelining के concepts एक बार revise कर लो. I am going to explain everything, but if you are having it in your mind, it will be easy to you for understanding purpose. Okay? So that is about this temporal parallelism. So what will be the speed up? If you will consider over here, so what is the speed up in our example? In our example of this evaluating of 1,000 answers, what is the speed up? What is the speed up? Speed up is 4. And what will be the efficiency? Efficiency is equal to speed up upon K. So what is the speed up ratio? So efficiency is 1. 1 means 100%. Okay, efficiency generally we will write in into percentage. So it means that 100%. Our efficiency will be 100%. If it is 1, then 100%. Suppose if it is a 0.99, suppose our answer is 0.99, so we will consider it is a 99% efficiency. So keep this thing in your mind. That is how we will write efficiency. Efficiency कैसे लिखते हैं? Percentage में efficiency will be generally mentioned in terms of percentage. Okay. So let's go for the next technique. Method number 2. Method number 2 is data parallelism. So what we will do in this data parallelism? Data parallelism में हम क्या करेंगे? So second technique is data parallelism. So in this technique, we will divide our total number of answer book into 4 parts. So it means what? Student number 1 to student number 250. Student number 251 to student number 500. Student number 501 to student number 750. And student number 751 to student number 1000. And then ये जो आपका जो फाइल है, ये जो एक स्टैक है, वो हम इंडिविजुअल टीचर को देंगे. So teacher number 1 will evaluate answer books of 1 to 250 students. Then teacher number 2 will evaluate answer books of 251 to 500 students. So that this is a teacher number 2. Let's say that this is a teacher number 3 and this is a teacher number 4. So this technique is known as data parallelism. Data parallelism हमने यहाँ पे क्या किया? जो टोटल हमारे पास 1000 आंसर बुक्स थे, उसको डिवाइड कर दिया. So we have divided our data. Data means we have divided our input into 4. इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया and then we have given it to the teacher 1, 2 and teacher 2, 3 and 4. So यहाँ पे एडवांटेज क्या मिलेगा? So ये टीचर इंडिपेंडेंट ऑपरेट कर सकते हैं. This teacher will evaluate this answer book independently. Student 1 ने जो आंसर नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी लिखा है वो टीचर 1 ही इवेल्युएट करेगा. Same way. So each and every answer will be evaluated by one teacher only. ये जो पहले 250 स्टूडेंट्स है उसके. Same way. ये teacher number 2 will evaluate 251 to 500. So like that. So that is called data parallelism. So यहाँ पे आपको कितना टाइम लगेगा? So now what is the time will require over here? यहाँ पे कितना टाइम लगेगा आपके टोटल 1000 आंसर बुक इवेल्युएट होने में? Consider the data, previous data. एक आंसर को इवेल्युएट करने के लिए 5 मिनट and there are such 4 answers in one answer book. So एक आंसर बुक को इवेल्युएट करने के लिए 20 मिनट. So एक टीचर कितनी आंसर बुक इवेल्युएट करेगा?
250. So 250 into 20. So what is answer? 250 into 20? Yes, 5,000. So it means what? At the end of 5,000 minutes, all teacher will finish its own task. हर एक टीचर उसका जो टास्क उसको दिया होगा वो कंप्लीट हो जाएगा. सो इसका मीनिंग आपके जो 1000 आंसर बुक्स है वो इवेल्युएट कितने टाइम में हो जाएंगे? 5000 मिनट्स में वो इवेल्युएट हो जाएंगे. सो यहाँ पे आपको जो स्पीड अप मिलेगा वो क्या मिलेगा? सो इट इज लाइक दिस. सो 20 into 250, so that is a 5000. So it is again 1/4 of sequential time. So here teacher corrects only 250 answer books, so and work simultaneously. This type of parallelism is known as data parallelism. ये parallelism को हम क्या बोलते हैं? Parallelism, data parallelism. As input data is divided into independent set and then they are proceed. So that is known as data parallelism. Clear? So this is known as data parallelism. Okay, and this is method. This is mathematical steps for it. So that we will discuss in our next lecture. Next lecture में हम ये discuss करेंगे इसकी mathematical techniques क्या है और कैसे इसका speed up हम कैसे calculate करते हैं. Just wait over here 1 minute. Let me take attendance one more time. I will share the book which we are using for this topic. ये बुक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. फ्रॉम दैट बुक वी आर हैविंग 2 चैप्टर्स ओनली. वो 2 चैप्टर है. सो आई विल मेंशन इट इन गूगल क्लासरूम में मैं सब कुछ मेंशन कर दूंगा. And once the chapter will be completed, once the chapter will be finished, I will upload PPT also.